एक निश्चित धारणा हमारे मन में ना बैठ जाए। ओशो ने अलग अलग आयामों से विपस्सना को उजागर किया है। इसमें से हो सकता है कोई एक आयाम किसी के लिए सुगम पड़े, कोई दूसरा पहलू किसी और व्यक्ति के लिए रास आए। जो प्रयोग करके आपको लगे कि इसमें खूब गहराई मिल गई, आप उसको ही अपनी साधना का मुख्य हिस्सा बना लीजिए। कुछ लोग हो सकते हैं मिश्रित प्रकार के, जिनको कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, 2-3 अलग अलग ढंगों से करना ही अच्छा लगता है, उनके लिए वही भी उचित है। और कुछ लोग मेरे जैसे हो सकते हैं महा आलसी, जिनको कुछ करना नहीं रहता, को लाओ त्सु की तानदेन विधि अच्छी लगती है, इसमें लगभग कुछ भी नहीं करना है। कोई कर्मठ व्यक्ति के लिए शायद मुश्किल हो जाए, तो चलो वो करने में रस ले, करने वाली विधि करे। भाव प्रधान व्यक्तियों के लिए हम शुरुआत में ही कर चुके हैं भगवान शिव की 8वीं विधि विज्ञान भैरव तंत्र की। तो आप स्वयं प्रयोग करना, और 3-4 दिन प्रयोग करने से पता लग जाता है। अगर सहज रूप से हमको उसमें गहराई मिल रही है तो वह हमारे लिए उचित है। और 3 दिन 4 दिन के बाद भी अगर हमको कोई गहराई नहीं लगती तो हमारे लिए वह विधि नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि विधि गलत है, इसका यह भी मतलब नहीं कि हम गलत हैं। जैसे आप जूता खरीदने या कपड़ा खरीदने दुकान पे गए और आपने कई कपड़े जूते उठा के देखे और आपके नाप के नहीं थे, इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप गलत हैं, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो जूते या कपड़े गलत हैं। वो किसी और के लिए फिट होंगे, आपके लिए फिट नहीं हुए। बस ऐसा ही समझना। आज हम भगवान कृष्ण ने गीता में जो संदेश दिया है उसके संदर्भ में ओशो का प्रवचन सुनेंगे। और ओशो ने समझाया है कि एक ही मंत्र श्वास का काफी है। लोग अनेक अनेक मंत्रों का जिक्र करते हैं, एक ही मंत्र पकड़ लो, श्वास, इतना बहुत है। और श्वास की विधि में भी अगर हम न केवल श्वास को जानें, देखें, निरीक्षण करें, बल्कि उसकी आवाज को भी सुनें, तो मामला और सरल हो जाता है। आती जाती श्वास में हल्का सा साउंड पैदा होता है, उसको गौर से सुने। हम जितनी सूक्ष्म चीज को सुनते हैं, हमारे भीतर उतनी ही सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म चेतना विकसित होती है। जो लोग स्थूल चीजों के संग जीते हैं, उनकी बुद्धि भी स्थूल और मोटी हो जाती है। जितनी बारीक और सूक्ष्म चीज को हम पकड़ेंगे अपनी किसी भी इंद्रिय के द्वारा, हम पाएंगे हमारे भीतर संवेदनशीलता, जागरूकता, कॉन्शसनेस भी उतनी ही प्रखर और पैनी हो गई। तो सांस की आवाज नॉर्मली तो हमको सुनाई नहीं देती जब तक कि अस्थमा का अटैक ना पड़े। सामान्य श्वास सुनाई ही नहीं देती। अगर हम गौर करेंगे तो सुनाई देने लगेगी। सुनते 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 फिर एक क्षण ऐसा भी आता है कि 2 सांसों के बीच में जहां अंतराल है, मोड़ का बिंदु है, सांस बाहर गई और भीतर आने के लिए अभी मुड़ी है, मुड़ रही है, उसमें तो कोई आवाज नहीं है। ठीक वैसे ही सांस भीतर गई और बाहर आने को मुड़ रही है, तो क्षण भर के लिए कोई भी आवाज नहीं है। चूंकि हम सुनने के प्रति संवेदनशील थे, क्रमशः हम वहां भी सुनने लगेंगे और वहां हमें महामंत्र अनाहत नाद सुनाई देने लगता है। उपनिषद के ऋषियों ने सोहम मंत्र का जिक्र किया है। सो भीतर जाती सांस की ध्वनि और हम बाहर आती श्वास की ध्वनि बिल्कुल ठीक ठीक ऐसी आवाज नहीं होती, लेकिन कहने के लिए, समझाने के लिए कि लगभग ऐसी आवाज, इसको सुनो। तो विपस्सना में एक और नया आयाम जुड़ जाता है कि हम सांस की आवाज को सुने भी, क्योंकि सुनते सुनते महामंत्र ओम में डूब जाना बिल्कुल आसान है। तो ध्यान से हम शुरू करते हैं, जागरूकता से, साक्षी भाव से। धीरे धीरे नाद प्रमुख हो जाता है, फिर हम सांस को भी छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं,
और नाद में लौलीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, जिससे समाधि फलित होती है। तो ध्यान और समाधि का ये छोटा सा अंतर याद रखना, ध्यान ही आगे चल के समाधि बन जाता है। लेकिन वो जो मुख्य बिंदु था वो अचानक चेंज होता है। हम साध रहे थे साक्षी भाव, चाहे शरीर की क्रियाओं के प्रति, चाहे मन के विचारों के प्रति, चाहे आती जाती श्वास के प्रति आनापान सति योग कर रहे थे, ध्वनि को सुन रहे थे साक्षी भाव से, और फिर नाद सुनाई देने लगा। वहाँ पर पता चलता है कि मैं इससे भिन्न और पृथक नहीं हूँ, यह मैं ही हूँ। अन्य चीज़ों के साथ हम पृथकता का एहसास करते थे। शरीर कोई और है, निश्चित रूप से पदार्थों से, भोजन से बना है, यह तो मैं नहीं हूँ। और यह बदलता रहता है। बचपन में एक ढंग का था, युवावस्था में दूसरे ढंग का हो गया, वृद्धावस्था में तीसरे प्रकार का हो गया। 40 साल पहले की फोटो से मिलाओ आप अपनी तस्वीर तो मिलेगी ही नहीं, पहचान ही न मुश्किल है कि ये इसी व्यक्ति की तस्वीर है। इतना बदल गया। और मन कितने तेजी से बदल रहा है हम भली भांति जानते हैं। जरा भी देर नहीं लगती विचारों के बदलने में। 1 मिनट पहले कुछ और विचार था, मिनट में भर कुछ और हो गया। बिल्कुल विपरीत आ सकता है, बिल्कुल ठीक विपरीत। इसका मतलब मैं वह तत्व हूं जिसने पुराने विचार को भी देखा था और अभी के विचार को भी देख रहा हूं। तो मैं तो कोई और ही हूं, जिसने बचपन को भी जाना, युवावस्था को भी जाना, वृद्धावस्था को भी जाना। वो कौन है जो तीनों को जान रहा? निश्चित रूप से वो 3 में से एक नहीं है, वो चौथा है। जिसने जागृति को जाना, स्वप्न को जाना, सुसुप्ति को जाना, वह तुरी चेतना है, वह चौथी है। वह इन 3 में से एक नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, हम जिस स्थिति में होते हैं हम उसी से तादात्म्य बना लेते हैं। बचपन में मुझे लगता था कि मैं बच्चा हूँ, युवावस्था में लगने लगा कि मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में लगने लगा कि मैं बूढ़ा हूँ। ये गलती हमारी भ्रांति है। मैं जानने वाला साक्षी चैतन्य वही का वही हूँ जो तीनों अवस्थाओं में था। मैं कोई और ही हूँ। तो तन से, मन से, हृदय के भावनाओं से स्वयं को पृथक करना, तादात्म्य तोड़ना, यह साधना का पहला हिस्सा है, जिसको हम ध्यान का हिस्सा मानते हैं, नेति नेति। फिर साधना का दूसरा हिस्सा है सकारात्मक, पॉजिटिव। अब तोड़ना नहीं बल्कि जुड़ना है। जब भीतर साक्षी चैतन्य ही रह गया, नाद नूर से ओतप्रोत, अब इसको स्वयं का होना जानो। क्योंकि हमने सालों सालों से, या कहो जन्मों जन्मों से, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना, उसको भूल गए। इसलिए जोड़ने की भी प्रक्रिया करनी पड़ती है। एक्चुअली तो हम वही हैं, लेकिन ये रिकग्निशन हम इतने लंबे समय में भूल चुके। जो हम नहीं थे उससे हम जुड़ गए, उसको स्वयं का होना समझने लगे। और इसी भ्रांति का दूसरा हिस्सा जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो बिल्कुल छूट गया। जब हम पहली बार वहाँ पहुँचते हैं तो हमको ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा स्वरूप है। तो इस बात को भी क्रमशः अपने भीतर जमाना होगा। अब स्वरूप में स्थित और प्रतिष्ठित होना होगा। इसको पहचानने में भी समय लगेगा। सिर्फ मेरे कह देने से कि आपकी बुद्धि के समझ लेने से बात नहीं हो जाएगी। एक लंबी हिप्नोसिस है। उससे विपरीत माना कि सत्य वही है जो हम स्वरूप में होके जानेंगे। लेकिन हम इतने हिप्नोटाइज्ड हैं गलत से कि हम वास्तविक स्वरूप को पहचानने में भी देर लगाएंगे। तो इसको भी सहज रूप से स्वीकार कर लेना, ऐसा होगा। धीरज और प्रतीक्षा चाहिए। तो साधना के 2 हिस्से हो गए। एक नकारात्मक, जो मैं नहीं हूं उससे मैं पृथक जानूं। भगवान महावीर इसको कहते हैं भेद विज्ञान। सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट करना। और फिर दूसरा है
जो मैं हूं अब उसके साथ तादात्म्य जोड़ूं। यह घटना प्रेम पूर्ण होने से होगी। तो ध्यान की घटना तो होशपूर्ण होने से हो जाती है, लेकिन दूसरी घटना बिना प्रेम के नहीं होती। प्रेम जोड़ने वाला तत्व है। प्रेम में यह प्रतीति आती है कि हम दो नहीं हैं बल्कि एक हो गए। इसलिए ओशो इतना ज्यादा जोर देते हैं होश और प्रेम, दो बातों पर, कि दोनों की जरूरत साधना में पड़ेगी। उसके बिना बात पूरी नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति केवल होशपूर्वक दृष्टाभाव से ओंकार सुनता रहे, आलोक देखता रहे, तो द्वंद्व विदा नहीं होगा, अद्वैत कभी फलित नहीं होगा। अब वहां पर प्रीति की भावना काम आएगी, क्योंकि वह जोड़ती है। तो खूब रसपूर्ण होकर, आनंदपूर्ण होकर, यह मैं ही हूं, ऐसा भाव करें। There are two parts of the spiritual journey. The first half is negative. What we call meditation is a process of disidentification from non-self. What I am not, I have to create a breakdown from it. Because for many, many years, or probably for many, many lives, I have been identified and attached with it. And an illusion has happened that this is me. With great awareness, watchfulness, we create a gap between the observer and the observed. I am not the physical body, the activities of body. I am not my sense organs and the information gained by the sense organs. I am separate from it. I was a child, then I became young, now I have become old. The body has changed so much. In fact, it's changing every second. Within 1 hour, 200 red blood cells will die, and of course new red blood cells will be formed, they will be replaced, so we will never come to know. 5,000 RBC are dying every day. And such is the case with every organ and every system of the physical body. Change is happening. We take new food, the old cells are replaced, new cells are created. If we do not take food for 24 hours, there will be a reduction of at least 300 to 400 grams in 24 hours. Millions, probably billions of cells have died, excreted. So body is changing. We recognize after a long time, if you look at your own photograph, 30 years old or 40 years old, it's very difficult to recognize. There is no similarity now. Everything is changed. Of course, the consciousness which knows is same. I was thinking I am a child, the body is changed, I am the same. Then I passed through the stage of youthfulness. It passed away. Then I entered into old age. I am the same, passing through different stages of the body. Same situation is with the thinking. Thoughts are changing even faster than the physical body. Somebody may be communist in a young age. It's very difficult to find a communist after the age of 35. He becomes capitalist. The thinking is changed.
thoughts change so fast. Sometimes we cannot even catch hold of the thoughts. It's always moving. Something new is coming. And sometimes just opposite thought is coming. Definitely I am not any of these thoughts. Not the previous one, not the present one, and nor which is going to come in the future. I am a watcher of this movie which is happening on the screen of my mind. The scenes are changing. But I am not changing, I am watching. Same is the situation with the emotions of the heart, the feelings, the sentiments. The word emotion means that which is always in motion, in movement, which comes and goes. It does not stay for long. The love comes, friendliness comes. Soon it goes away. Probably it will be replaced by hostility, enmity, and hate. But we become identified whatever is happening in this moment. When love was happening, I was thinking, I am a lover. When hate is happening, I am thinking, I am full of hate, I am angry man. Let us disidentify. I am neither love nor hate. These seasons of emotions come and go. I am the one who is always witnessing, watching. So this is the first part of spiritual journey, to get disidentified, separated from what you are not. And the second part of spiritual journey is to become identified with the authentic self. The authentic self is consciousness echoing with divine sound. This is the reality. But we have been living in illusion for so long. Even if we reach to the very center of our being, it takes time to recognize that this is real me. That's why patience is a compulsory element of spiritual journey. We have to be patient, and then we have to be loving. Love is the factor which joins, unites. Watchfulness creates distance between the two. If we apply the same watchfulness to our interiority, then we can never reach to a state of the ultimate mysterious union, the non-duality. So non-duality only can happen with great love, great affection. That's why Osho emphasizes on these two factors very much, awareness and love. Both are needed. He emphasizes little bit more on awareness because that is the first part. Always new people were coming to him, so he will emphasize again and again awareness, watchfulness, witnessing consciousness. And for those who have gone deep in meditation, he will tell the other half. Now accept, rejoice, be loving, feel connected,
Recognize your authentic self. This is what you are actually. And this can happen only in a very relaxed, restful, loving mood. So this is the second part. In other words, we can say the first part is dhyan, meditation, and the second part is bhakti, devotion. Combination of both is necessary for the complete journey. So please remember, while doing Vipassana, for new seekers, we emphasize on watchfulness. It will help. But remember, the second part will also come. When there is just awareness and you are listening the divine sound and there is nothing else, reaching to this state, the mantra Soham is also helpful, prescribed by the rishis of Upanishad. They say the sound of inhalation is somehow similar to so, and sound of exhalation is somehow similar to hum. It's not exactly so and hum. This is just an indication, symbolic. Something like this. The emphasis is on listening the sound of inhalation and exhalation. So this is something more, something extra with Vipassana. Listen to your own sound of breath coming in, going out, and there will be a small gap at the turning point of breath inside as well as outside. In that turning point, there will be no sound because the sound is created by the friction of the air passing through the trachea. For a moment, breath stops, so there will be no sound, and we were trying to listen. We were focused on listening. So in that moment, we will start listening the unstruck sound, the sound of one hand clapping. So Vipassana plus listening is very effective. This will take us very quickly to the soundless sound. That is the music of our real self. That's the existential sound. And listening to this, now you can drop watchfulness, feel connected, listen with love. So melting and merging happens, and soon we realize, oh, this is what I am. So what I was calling previously as Nad Brahma, the sound of God, now we recognize it's actually me. Aham Brahmasmi. I am the God. And so is everyone. This is not ego. Ego means I am superior, I am unique, and no one is like me. When somebody reaches to self-realization, God-realization, there is no ego. His statement may look egoistic to others. He is saying, Anal Haq, I am the truth. I am God. I am Brahma. But this is not egoistic statement. He is revealing, stating a fact. And this is not only about him or her, this is about everyone. So the seer of Upanishad says, Aham Brahmasmi, I am God. Further he says, Tattvamasi, you are also that.
Further he says, Hari Om Tat Sat. God is the sound of Om. This is the truth. In the third statement, there is no I, no you. This is very transcendental. God is Om.